हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट रडार। मैं हूं स्वाति खंडेलवाल। आज हमारे रडार पर है फार्मा सेक्टर की दिग्गज कंपनी एलेम्बिक फार्मा। कंपनी दुनिया भर में इंडिया फॉर्मुलेशंस पर काम करती है और अगर हम देखें कंपनी में काफ़ी नंबर्स पर भी नज़र डालेंगे किस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस रही और दिसंबर तिमाही पर देखें तो मुनाफा 40% गिरा है, 170 करोड़ रह गया है और मार्जिन में भी गिरावट देखने को मिली। लेकिन Q3 में आय 3% गिरी है। नतीजों पर क्या थे ट्रिगर्स, आगे किस तरीके का प्लान है कंपनी का, ये जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर शौनक अमीन साहब शो में जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए, फॉर योर टाइम, थैंक यू। पहले तो सर नंबर्स पर एक बार नज़र डालेंगे, किस तरह से परफॉर्मेंस को आप समराइज करेंगे, क्या खास हाईलाइट्स थे, क्या ग्रोथ ड्राइवर्स रहे? सबसे ज्यादा हाईलाइट, मेन हाईलाइट्स अगर आप देखते हैं तो सीक्वेंशियल क्वार्टर्स पे स्पेशली मेरा यूएस बिजनेस दैट इज स्टेबलाइज्ड। लास्ट ईयर परफॉर्मेंस कंपैरेबल नहीं है क्योंकि लास्ट ईयर का बेस काफी हाई था और उसमें अगर हम लास्ट 3-4 साल से देख रहे हैं तो हमारा यूएस बिजनेस हाई 30% CAGR पे चल रहा है और लास्ट ईयर पे लॉट ऑफ वन टाइम बेनिफिट्स भी थे, तो इसलिए कंपैरेबल नहीं है। लेकिन जो Q1 पे ड्रॉप हुआ था सेल्स इन यूएसए में, उससे Q2 नाउ Q3 पे अभी वो स्टेबलाइज हो गया। वी आर क्वाइट कंफर्टेबल दैट दिस इज द न्यू बेस फॉर द यूएस बिजनेस। सो अगर इस बेस पे हम आगे चलते हैं तो शायद there's a good chance we will be able to keep growing the US business on this. Also going forward in Q4 we have some interesting launches coming up in the US. हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट इनहेलेशन प्रोडक्ट वो भी लॉन्च होने वाला है Q4 या Q1 में, and we are quite confident that we will be able to build up as long as the market becomes a little more supportive. We should be able to make the US business start performing like we were over the last 5-6 years. उसके अलावा अगर हम इंडिया बिजनेस की ग्रोथ की बात करते हैं तो the India business has consistently been delivering high double-digit growth numbers. और अगर हम इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट ओवरऑल ग्रोथ देखते हैं तो कंसिस्टेंटली लास्ट 3 क्वार्टर से हम लगभग 5-6 पॉइंट इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट ग्रोथ से हायर ग्रोथ दे रहे हैं, and we are quite confident that the India business will continue to do well also. बिजनेस विल कंटिन्यू टू ग्रो। आप कह रहे हैं इंडिया बिजनेस पे अच्छी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स दिखते हैं आगे, बट सर यूएस बिजनेस की आपने बात की और आप उम्मीद कर रहे हैं थोड़ा बेहतर होगा यहाँ से, बट थोड़ा सा मैं उस पर आपकी व्यूज़ चाहूँगी क्योंकि अभी भी वहाँ पर प्रेशर है, प्राइसिंग प्रेशर। आपको क्या टाइमलाइंस लगती है, कब तक ये नॉर्मलाइज हो जाएगा? फ्रॉम व्हाट क्वार्टर विल इट स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग सर? यूएस बिजनेस की बात करें, प्राइसेस एंड वॉल्यूम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा एलैबोरेट कर पाएँ अगर आप हमारे लिए। So US market में we cannot predict when the prices will ease up, but like I said, we feel जो pressure Q1 में था, we see some stabilization from that base of pressure. We've been able to build up some volumes on this, and honestly, I will just be making a guess if I were to say कि अभी वो 1 quarter या 2 quarter या 3 quarter में उस पे थोड़ा relax ease आएगा। But as you are aware, ये US business ज़्यादातर cyclical business है, so there are ups and downs in the business, and we are hopefully that the bottom cycle of pricing pressure is maxed out at the bottom at this point in time. But when will the recovery happen? We are not sure exactly, but that's the only view I can give at this point in time. प्रेशर मैक्स आउट हो चुका है आप कह रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है, बट रिकवरी कब आएगी ये कहना भी मुश्किल है। कुछ क्वार्टर्स यहाँ लग भी सकते हैं, ऑफ कोर्स डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट एज यू सेड। इंडिया बिजनेस की आप बात करें, वो एक प्रॉमिसिंग स्पेस दिख रहा है एज यू सेड, एंड आई थिंक आपकी ग्रोथ भी वहाँ स्ट्रॉन्ग रही है 17%। सो मैं ये जानना चाहूँगी क्या ये ग्रोथ सस्टेनेबल है, इससे बेहतर हो सकती है, और कौन से पोर्टफोलियो ने सबसे ज़्यादा यहाँ कॉन्ट्रीब्यूट किया है एज फार एज इंडिया ग्रोथ इज कंसर्न्ड? Yes. So India growth, we are quite confident of these growth numbers. We are dependent on market, how the market performs, and we have been consistently giving a guidance that at this point we are confident of delivering at least 4 to 5 basis points higher growth than whatever the overall market growth is. So we are extremely comfortable with that situation at this point in time. What segment is growing first? अगर हम देखते हैं तो सब segments पे अच्छा growth आ रहा है। Antibiotics, cough and cold, women's healthcare, hormones, cardiovascular, diabetes, gastroenterology, जो भी हमारे main segments हैं
वो across the board sub segments में growth has been more or less in line or higher than the market. Okay, sure. So this is the picture as far as India growth and India market is concerned, sir. Animal health business का कैसा performance रहा? वहाँ पर क्या आगे outlook दिखता है, sir? Yeah, so the animal health business अगर हम देखते हैं तो last 2 साल से एकदम बेहतरीन performance आ रहा है. It is a high double-digit growth opportunity, and we expect this animal business to continue delivering in with that speed going forward. Market भी काफी conducive है अगर हम देखते हैं. Or in the sense, last 2 years there's been good monsoon, so it helps with the livestock and poultry market. Also, the commodity prices have been quite favorable in the last 2 years, so that's helped. And we expect this veterinary and animal healthcare business to continue to deliver these kind of numbers. तो अच्छा डबल डिजिट ग्रोथ की आपने बात की और ये कंटिन्यू रहेगा, आपको ये उम्मीद है, आप कह रहे हैं आगे भी. प्रोडक्ट पाइपलाइन सर कैसी दिख रही है आगे जाते हुए, और अगर हम बात करें कितनी फाइलिंग्स आपने अभी तक की हैं, कौन से या कितने नए लॉन्चेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन Q4, और क्या यहाँ पर कोई हाई मार्जिन प्रोडक्ट हो सकता है सर? So we're expecting, like I mentioned, we have 3 launches coming up in the next quarter, and उसमें से there are 2 interesting launches. One is the first inhalation product, which I mentioned, Formoterol, and the other one is a first to file product that is coming up for launch. It should be either in Q4 or Q1. Talking about margins, it's too early for me to give any suggestion on margins. Jab products launch hote hai, to then only we get a sense of the margins for US business, and that is just how the market is. But we have quite a few products lined up, but we have filed quite a few products also. So we're filing about 15 to 16 products every year, and the launch profile also should be good. So I think we've done a lot of work on that. So I think we're quite, there should be good number both in terms of filing as well as in terms of new launches coming up in the next 12 months. ओके सर, न्यू लॉन्चेस की और आपकी फाइलिंग्स की. इंजेक्टेबल्स फैसिलिटी पर सर क्या अपडेट है? इफ यू कैन गिव अस अ सेंस, किस तरीके के ऑब्जर्वेशंस वहाँ देखे गए हैं बाय US FDA, कब तक आप एक्सपेक्ट करते हैं वहाँ पर रेजोल्यूशन आ जाएगा? So at this point, all I can say is we are working with the US FDA to resolve some of these issues, and it will happen. We don't have any definite timelines on this at this point in time. इज वर्क इन प्रोग्रेस एज यू सेड, वहाँ पर काम हो रहा है, बट कुछ डेफिनेट टाइमलाइंस नहीं है सर. हमने ऑफ कोर्स क्वार्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की, ये साल अब एक क्वार्टर और रह गया है. नेक्स्ट ईयर कैसा आप देखते हैं ओवरऑल फ्रॉम द टॉप लाइन बॉटम लाइन पॉइंट ऑफ व्यू, द चैलेंजेस दैट यू हैव सीन ऑल थ्रू, और अब वहाँ पर कितनी रिकवरी देखते हुए कैसे देखते हैं अगले साल? क्या प्रोजेक्शंस हैं, क्या टारगेट्स हैं फॉर नेक्स्ट ईयर रियलिस्टिकली विद चैलेंजेस ऑन ग्राउंड सर? So, honestly, we don't give guidances for our top line for the coming year. As you know, the market is extremely unpredictable. I think consistently, both for India and US, our endeavor is to outperform the market. And that is what we work towards. And I think in the past, we have a track record of being able to outperform the market consistently. And, like I said, that's where we are as an organization at this point in time. अगर मैं आपसे एनिमल बिजनेस, आपने कहा ऑफ कोर्स उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, बट आगे और उसका प्रॉस्पेक्ट्स और क्या ग्रोथ दिख सकती है, कितना मार्केट शेयर वहाँ आप बना सकते हैं, अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है, क्या साइज़ है, अगर वहाँ पर हम कुछ एक्शन प्रॉमिसिंग देख सकते हैं? और दूसरा, कोई M&A अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ में इस वक्त है, कोई एरिया जहाँ आप समझते हैं अच्छी स्पेस है जो आप एंटर कर पाएँ? एनीथिंग ऑन योर रेडार सर? On the M&A side, there's nothing on our radar at this point in time, and we have no plans for any M&A also at this point. So okay. We feel there's enough investments being done for organic growth within the organization, both from an India point of view as well as US business. And the question you asked me on animal health business, हमने काफी चीज किया है animal health business में last 2-3 साल में to reorganize ourselves, to increase distribution, and we see plenty of opportunity on this side. Is there market share? Unfortunately, there are no published numbers for the veterinary market, so that I cannot answer, but I think we've been doing fairly well, and I think we're probably in line with other companies, maybe a little better than the market. If I want to take an average of performance of
all companies operating in medcare from their quarterly numbers. And quick last सवाल सर, कैपेक्स अगर क्या लाइनअप होगा फॉर द नेक्स्ट ईयर, किस तरीके की एक्सपेंशन पर आप फोकस करेंगे? इज देयर अ नंबर दैट यू कैन शेयर? So abhi going forward at this point there is no large new capex is planned. We have done quite a bit of capex in the last 3-4 years. Any capex that comes in the future will just be maintenance capex and running capex for normal upgradation and maintenance of plants. So beyond that, there are no capex plans at this point. No capex plans as of right now, no significant ones. Thank you sir हमारे साथ बात करने के लिए और समय देने के लिए। शौनक अमीन साहब, एलेम्बिक फार्मा के मैनेजमेंट, हमारे साथ बातचीत करते हुए नंबर्स पर आगे क्या है आउटलुक।